Alright, so we left off with the क्या कहते हैं health belief model, right? So like जिसके दिमाग में like I don't know, जिसको समझ में नहीं आया हो और जिसको अपनी memory ताज़ा करनी है, right? I found a good video that's gonna elaborate what health belief model is. It's pretty straightforward, right? I hope you guys will find helpful. उसके बाद we're gonna carry on. So I hope सबको आवाज़ आ रही होगी. नहीं आवाज़ आ रही है वीडियो की तो you can let me know. Hello, my name is Josephine Tao, and today I'll be talking about the health belief model. This is one of the most widely used health belief theories in public health and is based off of the values and motivation of an individual. It explains a person's behavior when faced with a behavior change, such as eating healthier or being more physically active. This model is unique because it was made by social psychologists in the 1950s to predict health behaviors. These psychologists worked under the U.S. Public Health Services to investigate why their prevention and disease detection efforts did not draw much attention. Fortunately, the health belief model was adapted to explain the behavior of reluctant individuals. So, what is the health belief model? This model revolves around 6 constructs or ideas. They are perceived susceptibility, perceived severity, perceived barriers, cues to action, self-efficacy, and perceived benefits. Perceived susceptibility is where the individual considers the negative consequences of a condition and how harmful it is. It is also where the risk factors and the target population come into play. So let's use STI and HIV screening as an example. In this construct, an individual is aware that they may be exposed to an STI or HIV. Perceived severity is a person's belief on how serious a condition might be and what the consequences are. In other words, it is also one's perception of the extent of harm from a disease. The individual must specify consequences of the risk. For example, the risk of contracting STIs or HIV is severe enough that the individual will avoid getting it because it might mean that they need to pay a lot for medication or have expensive treatment or a lot of pain. The next construct is perceived benefits. This is one's belief in the efficacy of the advised action to reduce the seriousness of the disease or harmful state. It's what the individual believes to be the benefit of stopping the behavior. Furthermore, the individual needs to determine what action they need to take. In relation to our example of STIs and HIV, this means that a person believes the STI or HIV screening is beneficial. It will let them get early treatment and prevent the spread of infection to others. Next on our list is perceived barriers. This is essentially the perceived cost or hindrances of the new behavior change. An individual may be reluctant to get a screening because they might not have adequate transportation, are not aware of clinics that offer the screenings, or might be embarrassed to go to the clinic. The last 2 constructs, cues to action and self-efficacy, were added later in 1988 to help accommodate unhealthy behaviors such as overeating. So cues to action are the forces that make an individual feel like they need to take action. It's what motivates the person to change and is a strategy of preparing for the behavior change. These cues might be seeing an advertisement or a flyer for screenings or receiving reminder texts from a public health campaign. Self-efficacy is a person's ability to believe they can achieve the behavior change. A patient will be confident on going to another appointment in the future or know how to identify an STI and educate others about HIV. Overall, the health belief model is really useful and can be used for promoting bicycle helmet use, vaccinations, or even condom usage. This was the first theory made for health-related behaviors. It predicts behaviors based. Alright, so like I hope you guys understood the health belief model. It's fairly easy, right? How seriously you take the disease, how likely you're gonna get the disease, what's the benefit, what's the cost of the treatment, uh, what is your own self confidence about the things that you can do on your own, right? And क्या कहते हैं उसके अलावा there's one उसके अलावा external motivational factor that's gonna change your behavior.
You change your opinion and change your belief about whether you should take the treatment or not, जिसको हम cues to actions बोलते हैं. All right. So अगर फिर भी clear नहीं होता, you can drop me a message. We're gonna discuss in depth about it, a few things. So, are there any queries for the health belief model? All right. What about Zara Iman? Like health belief model checks out. क्या सीन है? Clear, sir. All right. ठीक है. So, health belief model, right? Now, I said that previous class can there, right? If you recall, the health belief model is a theoretical concept, right? Does not have any experiments to back it up. ठीक है. Uh, Health belief model does not have any experiments on its own, right, to back it up. So we can look at another experiment which has no relation with health belief model, right? It's a completely separate experiment, but we can kind of apply health belief model on it जबरदस्ती, and let's see if it worked out or not. The health belief model कोई अपना experiment नहीं है, but we're gonna take one unrelated experiment and find out यार health belief model वाकई ही apply करता है नहीं करता, right? तो health belief model का ये अपना proof नहीं है, लेकिन ऐसे ही हम चेक करें किसी और चीज को अप्लाई करके. So this very small experiment, I don't know ये black वाली किताब में है या नहीं है. एक मेरे पास क्वेश्चन आया है. नो सपोर्टिंग एविडेंस, नॉट ऑन इट्स ओन, कोई इसका अपना कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, दूसरे के ऊपर हम अप्लाई करेंगे. सो देखो, थिंग इज हेल्थ बिलीफ मॉडल इज अ कॉन्सेप्ट, राइट? सो थ्योरी कैन बी एप्लीकेबल ऑन मेनी मेनी थिंग्स. फॉर एग्जांपल हेल्थ बिलीफ मॉडल तुम उसके ऊपर बुल पिल वाली स्टडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट रिगार्ड कि चीज़ों के ऊपर आराम से अप्लाई करके हम देख सकते हैं. ऑलराइट, सो this study, I don't know if it's in your black book or not, but basically this is a research by Quinst and Paulson and Galfors. So, but what they want to know is they want to use a technique called fear arousal, right? They're going to scare people. ये लोग को डराएंगे, right? They want to know whether can fear make people give up smoking, right? So they're going to use fear to make people give up smoking, and can it also stop relapse? Relapse is the thing when you go back to your original behavior. So क्या लोग को स्मोकिंग से रोकने के बाद क्या लोगों को हमेशा के लिए स्मोकिंग से रोकेगी या नहीं? Using fear, that's what they want to find out. So the technique they're going to use is going to be known as a treatment group, right? Treatment के अंदर fear arousal है. And obviously they want to compare it with their usual technique जो obviously commonly इस्तेमाल होता है. So that's the control group. So the fear arousal is going to be the treatment group, and the control group is the one जिसके अंदर आप normally जाते हैं. So they make two groups, random allocation होती है, right? So the control group only gets counseling about smoking and its harmful effects, जो standard procedure होता है, right? Nothing special. The treatment group gets group counseling, right? उसके अलावा they get additional aspects as well. They get personal advice from the nurses, they get reading material, and these reading materials is a booklet that is full of smoking risks and also benefits of quitting. And not only that, ये घर जाते हैं तो nurse इनको 9 दफ़ा call करती है just to tell them negative effects of smoking, right? So this is the treatment group. They're basically trying to scare the people to give smoking. ठीक है. So we want to find out whether this techniques works, the control wala, or whether fear arousal is effective in people giving up smoking. Well, the results show that, you know what, these are the results. So dono were effective, but the treatment group is numerically more effective. So yeah, fear arousal does work. So if you apply health belief model on it, right? ये वो लोग हैं जो स्मोक करते थे, and obviously fear arousal अगर नहीं होता तो वो लोग स्मोकिंग अभी तक करते, right? So what changed? Did their belief change? Yes, their belief about smoking changed, right? अच्छा, लेकिन क्या इनकी beliefs about smoking पहले से change थी या change करनी पड़ी? Obviously fear arousal की वजह से इनकी belief change करनी पड़ी. So basically the fear arousal is then gonna be acting as a cues to action.
ठीक है, क्योंकि fear arousal basically gave them some information, yes, some motivation from the outside, from the environment, to change their behavior and beliefs about smoking. So इसका कह सकते cues to action is effective and can reduce smoking behavior. ठीक है, also ग्रुप काउंसलिंग के अंदर होता क्या है कि काउंसलिंग के अंदर आप करते क्या, काउंसलिंग के अंदर बेसिकली यू टीच पीपल the yeah, you make people aware about the difficulties of giving up smoking, the consequences of giving up smoking. उनको बताते हैं कि भाई तुम्हारे जिस्म में से दर्द होगा, पहले हेडेक भी होगा, things like these. And counseling के through they motivate people कि you know what, जो headache होगा, nausea होगा, you guys can deal with it. And group counseling के अंदर they give helpful information how to deal with it. So basically overall बंदे की जो है self confidence बढ़ाते हैं on how to deal with the situation alone. So group counseling के अंदर self efficacy वाला point handle हो गया है. और ऑल्सो उसके साथ सब्स्टिट्यूट भी बताते हैं कि भाई आप स्मोकिंग या निकोटीन पैचेस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं XYZ, एंड आपके इर्द गिर्द जो लोग स्मोक कर सकते हैं आप उनको भी बोले कि मेरे सामने स्मोक नहीं करो, राइट. सो बेसिकली सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये होता है कि आप अपनी तरफ से खुद क्या कर सकते हो, so उनको बताया कि आप ये भी कर सकते हो. So this does kind of apply in the health belief model. Okay, if you change a person's cues to action, right? If you take care of the self-efficacy, right, you can change their beliefs about the disease, and then they can change. They will kind of adhere to the treatment, which they previously did not. So यहाँ पे लिखा what is meant by fear arousal as a strategy for promoting health. So basically यहाँ पे लिखा है where people are given information, right, about harmful effects of their disease. So basically उनका fear create करवाते हो so that they can change their behavior and live a more healthier outcome. So yeah. So this is kind of proof कि यार चलो हेल्थ बिलीफ मॉडल कि कुछ कंपोनेंट्स काम करते हैं, राइट. ऑब्वियसली इसके सारे कंपोनेंट्स नहीं है, but on a general idea it does work. Cues to action is going to work to change person's belief, self efficacy is effective to change the person's belief, and things like this. But however, about this experiment, this is about only people who smoke, so it may not be generalizable on other people who don't smoke. Is it applicable? Yes, fear arousal now can be used to, cure smoking. Is it valid? Yes, क्योंकि random allocation था and there was also a control group, right? And क्या कहते हैं? It went on for longitudinal time, the long amount of time के लिए लोगों को study किया था, not short-term snapshot study. Was it individual situation? Well, it is both, as in uh, the people in the treatment group did better क्योंकि इनकी treatment के situations different थे, right? So this group gave better results क्योंकि इनकी situation completely अलग थी. So that's the situational aspect. Individual aspect कहाँ से आएगा? Individual aspect ये आएगा कि see the treatment group did improve people's lives but not everyone, क्योंकि जो result आया था 57 आया था. इसका ये मतलब है कि there is still 43% of people who did not stop smoking. So not everyone responded to the fear arousal. तो इसका ये मतलब ये हो सकता है कि not everyone is easy to frighten. तो यहाँ पे individual differences का भी concept apply हो सकता है कि because it didn't work on everyone because of individual differences. All right, ये हो गया. Now we have another model, right, जो health belief model से निकल के आता है, but it's a bit different. See, health belief model is about what you would do as a patient, right? Compliance model is something else. Compliance model is kind of like the health belief model, but it's not going to explain what you will do. It is going to explain what your caregiver will do for you. So it's usually it's like the health belief model, but of the people who are under care someone. So basically, a young kid who is under care of a mother, right? उनके ऊपर health belief model apply नहीं होगा, compliance model apply होगा. Old person who is under the care of a younger relative, उसके ऊपर health belief model apply नहीं होगा, उसके अंदर compliance model apply होगा. When someone else makes a decision of someone else's treatment, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो mother and child wala. So it's the mother who's going to decide what the child needs, what the child gets. So it's not the child who, अगर child who decide कर पाता तो it's going to be health belief model. The question, what is that? Second hand medical treatments कह सकते हो, second hand medical treatments.
ऑलराइट, सो इसके अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? सो इट्स डिफरेंट देन द हेल्थ बिलीफ मॉडल, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हेल्थ मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है जो हेल्थ बिलीफ मॉडल का नहीं है. सो हेल्थ मोटिवेशन के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ सकते हैं. बेसिकली हेल्थ मोटिवेशन इज द थिंग दैट एनीथिंग दैट मेक्स यू do something healthy, right? Anything that keeps you on track, anything that keeps you healthy. Now now the things can keep you healthy are going to be positive and negative. For example, positive aspects क्या होंगे, positive health motivators क्या होंगे? You wanna live a long life so you can see your family, right? That's a health motivation, that's a positive aspect. You know what, religion के अंदर ये चीज़ें करना हराम है, so that's a positive aspect, right? So you are taking positive things as a motivator to keep you on track, right? Positive things as a motivator to keep you on track. Negative things can also be as a motivator. For example, मैं ये करूँगा तो मैं जहन्नुम में चले जाऊँगा, right? मैं ये करूँगा तो my family will disown me, मैं ये करूँगा तो मुझे कैंसर हो जाएगा. So basically you're gonna look at the negative consequences of doing something unhealthy, and then you're gonna get motivated to stay healthy. यार उसको भी तो देखो, वो बेचारा ईदी सेंटर में पड़ा हुआ है, so I should not do that to end up like him. So basically you can use negative things and positive things both as a motivator to keep you on track, right? Incentive value of adherence is the second thing. Incentive value of adherence का मतलब है कि what contribution will, क्या कहते हैं, will it add if I follow the medication? So basically, let's suppose you're the decision maker, someone who's old, right? So तुम सोचोगे incentive value of adherence के हिसाब से, अगर मैं ट्रीटमेंट दिया तो उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? Will it increase their lifespan? Will it reduce the pain the person is? Will it make the person less vulnerable to the disease, right? Anything. So basically तुम देखोगे कि ठीक है, दवाई फॉलो करने से उसकी जिंदगी के अंदर कौन से एडिशन हो जाएंगे, ठीक है. So that's incentive values for audience. Then this is the person's perception about the treatment. So this is the caregiver's perception about the treatment. वो खुद treatment के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है. Do they consider treatment bad? Do they consider treatment good for the child overall? तो ये basically health care giver का अपना perception है. Alright, इसके अलावा yeah. So what you have to do इसके अंदर के yes, इसके अंदर cues to action होंगे. Cues to action की जगह हमने ये डाल दिया, motivators, things that are gonna motivate you, right? अच्छा, मदर्स परसेप्शन की जगह तुम कह सकते हो कि वो आ गया जो बिलीव्स होते हैं अबाउट द परसीव वो ससेप्टेबिलिटी वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? I have a question. What is that? For example, if the caregiver is scared themselves, would they be reluctant to choose the treatment? Yes. फॉर एग्जाम्पल नाउ यू हैव अ डिबेट ऑनलाइन कि हमें कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए. ओल्ड पीपल जिन्होंने अपने ज़माने में वैक्सीन का नाम नहीं सुना होगा, दे विल फील कि यू नो व्हाट, वी डोंट नीड नो वैक्सीन. पीपल हु हैव बीन, जो आजकल के जो 30 साल के जो पेरेंट्स होंगे, शायद न्यू एज पेरेंट्स, उनको बचपन में वैक्सीन लगा होगा, सो दे माइट फील कि यार हमें अपने बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए. डिपेंड्स ऑन द केयर गिवर्स परसेप्शन. So is this applicable? Yes, it not. So this, now we have a model to explain caregivers perspective regarding the adherence, right? So doctors क्या कहेंगे if someone, if for example caregiver की वजह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, फॉर एग्जाम्पल द किड हु इज अंडर द केयर गिवर, राइट, उसको ट्रीटमेंट लाजमी चाहिए, बट केयर गिवर कंसेंट नहीं दे रहा, अब क्या करेंगे? सो डॉक्टर्स कैन यूज दिस काइंड ऑफ मॉडल टू फाइंड आउट कि हमें क्या करना चाहिए, राइट? और is it individual situational? Both is both. Caregiver perception is the individual basis, right? The cues to action is the situational basis. Cues to action is now going to be known as the motivators for health in this concept. Culture wise भी आ सकता है, क्योंकि किसी कल्चर्स के अंदर देयर कुड बी मोर देन वन केयर गिवर. इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी के अंदर लाइक अमेरिका, यूरोप वगैरह, वहाँ पे ऑब्वियसली बच्चे का जो केयर गिवर होगा माँ बाप होंगे, राइट? यहाँ पे बच्चा केयर गिवर इज गोना बी सम अंकल प्लस द माँ बाप प्लस द दादी प्लस द नाना प्लस लाइक. सो क्योंकि घर वाले कलेक्टिवली डिसीजन बनाते हैं, राइट? सो यहाँ पे शायद
there could be many individuals' perception involved as compared to only one person's perception involved, and that's the differences of cultures. Bharat. So does this work? Yeah, nahi. As in, chalo, fine, ठीक है. But does this work? Okay, we know that health belief model can be applicable, but will this work? Will does the compliance model work or not? So there's this study, right? Uh, so एक स्टडी होती है बच्चों के ऊपर, right? And the बच्चे, the kids who are as young as 6 weeks old, as old as 10 years old, right? And you know these kids are under 18, so ये अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते. माँ बाप एक मिनट रुक जाओ. There's a question. If the national health system is deficient or lacking, would it that be included in the situational factors? Yes, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसके अंदर आएंगे ना, क्यूज टू एक्शन के तौर पर आ जाएंगे एक तरीके से. All right. Because that's going to impact your perception, right? All right, so study. So you have this age range of kids. Age range is important because now you know कि यार ये caregivers के अंडर रहते हैं. They cannot make decisions on their own, so they're going to be dependent on a guardian. तो इनको एक oral liquid antibiotics देते हैं, right? And who's responsible for giving these antibiotics? You guessed it, the parents. And doctor ने बोला था कि आपको आगे भी एक साल, एक हफ्ते बाद भी आ जाना. And who's supposed to bring them to the visits? You guessed it, the parents. So they want to know कि यार compliance model यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा. All right. So there are 125 kids, right? It's a very huge number of people, and obviously age range भी बहुत बड़ी है. So this does make this study generalizable, right? All right. And the data was collected using a 1 hour long interview with patient after they had visited the doctor, right? So क्या कहते हैं qualitative data था, in-depth information was collected, right? So again, just kind of makes the study थोड़ा बहुत valid क्योंकि इन depth data लिया गया था with each patient, ठीक है ना, and every patient was interviewed as well, so सबके लिए standardized procedure था. Not everyone got this different procedure, so it kind of adds control in the study. All right, so what are they want to find out? So what's the idea? What's the idea that they're going for? The DV. All right, what they're gonna do, they're gonna ask the name of medication that the kid gets. भाई तुम्हें कौन सी दवाई मिलती है, कितनी दफा तुम्हें मिलती है, ठीक है, एंड तुम्हें अगली दफा कब आना है. सही है. इससे क्या पता चलेगा? इससे नंबर वन ये पता चलने वाला है कि अगर मैं पूछता हूँ बच्चे को भाई आपको कौन सी दवाई मिलती है, कितनी दवा मिलती है और कब आना है अगली दफा, इससे ये पता चल जाए कि अगर बच्चे को दवाई का नाम नहीं पता, इसको मेडिसिन नहीं मिलती. बच्चों को अगर दवाई का नाम पता चलेगा इसको मेडिकेशन मिलती है, राइट? तो यहाँ से पता चल जाएगा बच्चे को दवाई माँ बाप दे भी रहे हैं नहीं दे रहे हैं. नंबर टू, अगर फॉलोअप का डेट बच्चे को पता ही नहीं होता, इसका मतलब है कि माँ बाप ने बच्चे को बताया नहीं कि तुम्हें फॉलोअप कराना है. इसका मतलब माँ बाप इसको फॉलोअप के लिए आएंगे नहीं. लेकिन अगर माँ बाप ने बता दिया कि तुम्हें फॉलोअप इस तारीख पे आना है, तो ऑब्वियसली देर सीरियस अबाउट द फॉलोअप एंड फॉलोअप के लिए माँ बाप लेके आएंगे. सो फॉलोअप डेट पूछने की वजह से पता चल जाएगा कि माँ बाप उसको बच्चे को लाएंगे अगली दफा नहीं लाएंगे. सो ये पता चल जाएगा. Results. The parents or the mothers, right, जो बच्चे के बारे में ज़्यादा कंसर्न थे, right, इन्होंने सबसे ज़्यादा बच्चे को टाइम पे दवाई दी और सबसे ज़्यादा फॉलोअप के लिए लाते थे, ठीक है, क्योंकि उनको लगा था कि जो बच्चे को कोई ना कोई बीमारी है, that is very harmful to the kid. So she took the illness seriously, and she also looked at the positives of giving the medication to the kid, right? All right. So basically, इससे पता चल गया कि mother की perception is very very important whether the kid adheres or not, right? अब ये नहीं पता चला कि कितने बच्चों ने अडेयर किया, कितने बच्चों ने अडेयर नहीं किया. That's not even our concern anymore. We just want to know कि भाई compliance model में apply हो भी रहा है कि नहीं हो रहा. And basically अब हमें पता चल गया कि क्योंकि mother की perception is very 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 important and whether the kid gets medication or not. So this tells you कि yes, compliant models work. ठीक है. We don't want to know कि कितने बच्चों ने adhere किया या नहीं किया. We just want to know why did the kids adhere. The why is the reason compliance model. So let's talk about this research. Because it's all about proving whether compliance model works or not. So, well, is this valid? Well, yes, because they did this in an actual hospital where the children
word present, right? Uh, so the sample was so the experiment was externally valid, but हो क्या सकता है कि there could be certain demand characteristics क्योंकि obviously बच्चा तो अपनी अम्मी को जानबूझ के ट्रबल के अंदर नहीं लाएगा ना, बोल दे कि नहीं नहीं मैं अम्मी दवाई नहीं लेती, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हो सकता है कि they might wanna save their mothers from trouble, तो हो सकता है बच्चा फिर भी झूठ बोल दे, तो demand characteristics might be there, ठीक है ना? Alright, the way they measured whether the kids were getting medication or not, right? They introduced standardized questions with every kid. So the same questions was asked with every single kid. So it basically is a form of control, which kind of increases the internal reliability. Is it applicable? Yes. Now we know that you know what. If the mothers are concerned, they're gonna give medication to the kid. So by that logic, we can now target our information to the caregivers so that they can give treatment to their patients. कल्चर बायस था यस, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे तो मदर डिसीजन मेकर थी ना, हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारे लोग दूसरे लोग डिसीजन मेकर्स होंगे, हमारे कल्चर के अंदर क्या पता एप्लीकेबल नहीं होगा। What's generalizable? Yes, I talked about that. Is it individual situational? People who don't adhere, वो मदर की परसेप्शन डिफरेंट होती है, सो दैट्स इन इंडिविजुअल, राइट? सम पीपल मे नॉट हैव अ डेट क्योंकि शायद क्या पता कि वो दवाई एक्सपेंसिव थी, दवाई एक्सपेंसिव होने की वजह से द मदर्स यू नो डिडंट गिव मेडिकेशन टू किड, ये क्या पता फॉलो अप विजिट एक्सपेंसिव होंगे, दैट्स व्हाई दे डिडंट गिव फॉलो अप विजिट टू द किड। सो हो सकता है मदर के परसेप्शन फिर भी सही है लेकिन उनके हालात थोड़े मुश्किल थे जिसकी वजह से अडेयर नहीं कर पाया, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, बट ऑल इन ऑल इट्स प्रूव दैट compliance model does work. So yeah, uh, so that is for the first section. Won't these be individual differences? The individual differences will count in the personality aspect. Situation जो is gonna be the external environment wala scene. So personality aspect will be the perception wala, and जो money and transportation बेचारे कहाँ पे रहते हैं वो situation ही होगा. So all in all, summarizing, we were just done with the first section by the way of the second chapter. Types of non-adherence, Clark की research थी जो तुम्हें ये याद करने थे. उसके बाद the reasons why people don't adhere, हमने सबसे पहले the rational choice theory के बारे में बात किया. We have the Australian study and Bullpit study. सही है. उसके बाद we talked about health belief model जहाँ पे पूरा का पूरा health belief model है. Then there is this one experiment with the fatal arousal. And उसी के अंदर we have the compliance model जिसके अंदर we have this experiment. And that concludes our first section. इसमें कोई मसला? All right. Now, this section is gonna focus upon how do you find out whether people are adhering or not. ठीक है, measuring adherence. So, if I ask you यार हम पता कैसे लगाएंगे adherence की spelling गलत है यहाँ पे. Here. अच्छा, if I ask you how do you guys find out whether people are adhering or not, your common questions is gonna be भाई उससे जाके पूछ लो दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे. And yes, I agree, उससे कोई आके पूछ सकता है. तुम लोग कह सकते हो उसकी माँ से पूछ लो कि यार ये दवाई लेता कि नहीं लेता. I agree, ये भी हो सकता है. So basically, going and asking the people whether you take medications or not is self-report. क्योंकि सवाल का जवाब भी उसी बंदा बताएगा जिससे तुम सवाल पूछ रहे हो. बेसिक को अपने बिहेवियर के बारे में सवाल का जवाब बताएगा कि तुम मेडिकेशन लेते हो कि नहीं लेते. सेल्फ रिपोर्ट. सो सेल्फ रिपोर्ट इज वन वे. उसके अलावा यू कैन से क्वेश्चनर्स करा सकते हैं, चलो क्वेश्चनर भी करा लेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम द कंटेम्पोररी या कॉमन way of checking whether people take their medications or not, what other techniques are out there वो हम पढ़ेंगे, right? So I find it very interesting, so let's get into it. अच्छा, सेल्फ रिपोर्ट का मैंने बात करा था, राइट? मैं बात कर रहा था सब्जेक्टिव इसलिए क्यों है क्योंकि इट इज सब्जेक्टिव, क्योंकि यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल्स आंसर टू बी अ फैक्ट. You will also always suspect कि कोई ना कोई biasness आई होगी when people tell themselves वो कितनी दवाई लेते हैं कितनी दवाई नहीं लेते.
That's why subjective, क्योंकि their answers are not always to be trusted or accurate. So does self-report help you in measuring people adherence? Rykard and Broder check this, right? तो होता क्या है? Uh, they Rykard and Broder are aware कि भाई self-report हम questionnaires देंगे ना तो demand characteristic 100% आएगा. They are aware. ठीक है ना? लेकिन उसके बावजूद they do this research and they're very clever about this. किस तरह? They're gonna give questionnaires to people, right? अब questionnaires दे दिए तुमने लोगों को. अब वो वापस करेंगे नहीं करेंगे वी डोंट नो. ठीक है, वी डोंट नो. वी डोंट केयर वेदर दे व्हाट दे आंसर. वी ओनली केयर अबाउट क्या वो वापस करते हैं कि नहीं करते हैं, वो क्या फिल करते हैं. वी नॉट कंसर्न अबाउट दैट. सो ड्राइकर एंड ब्रोडर सेट के भाई हो सकता है जो लोग क्वेश्चन वापस नहीं देंगे ना, हो सकता है कि वो लोग दवाई भी कम लेते होंगे. Weird logic. But if you think about this makes sense. See, they go to a hospital, ठीक है, एंड उसी हॉस्पिटल के अंदर बंदे को फॉर्म दे देते हैं. ठीक है कि भाई आप हॉस्पिटल में आए, थैंक यू वेरी मच. यस, एनालिस जो भी है प्रिडिक्टिव फैक्टर्स कह सकते हो कि थैंक यू वेरी मच आप हॉस्पिटल में आए. यू नो व्हाट, यू टेक दिस मेडिकेशन जिस तरह से आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है, बट यू नो व्हाट, टेक दिस फॉर्म एज वेल एंड आप हमें मेल कर दीजिए, आप फिल कर दें. नाउ पीपल हु आर डेडिकेटेड टू ट्रीटमेंट, they're going to do everything that the hospital tells them to do, even filling a form. People who are not dedicated to the treatment, they're not going to fill the form the hospital दिया हो. That's what they're going for. People who don't give the forms back are not serious about what the hospital said and will not adhere to the medication. People who are serious will give the forms back and they will adhere to the medication. Let's see, let's find out ऐसा होता है कि नहीं होता. All right, I have one more question. Yes, there are factors. There are factors. And whether they address this or not, अभी हम देखते हैं. To find out who participates in the research, as in to find out who gives the forms back regarding adherence to the medication, right? So basically ये लोग हैं जो डायबिटीज के मेडिकेशन देते हैं, एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि कौन लोग ऐसा है जो बंदा फॉर्म वापस देता है. जो बंदा फॉर्म वापस नहीं देता, क्या इसका ये मतलब है कि वो दवाई भी कम देता है? दैट्स व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट. ठीक है, यहाँ पे फॉर्म वापस देने का हम पार्टिसिपेट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जिस बंदे ने फॉर्म वापस दिया होगा वो हमारे रिसर्च के अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा ना. जो बंदे ने फॉर्म वापस नहीं किया होता, ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट पर्सन इन्फॉर्मेशन, तो हमारी स्टडी के अंदर पार्टिसिपेंट ही नहीं बन सकता. तो दैट्स व्हाई फॉर्म वापस करने का हम पार्टिसिपेट्स इन द रिसर्च का लफ्ज दे रहे हैं. आई होप दैट क्लैरिफाइज. तो who is gonna be our target? Kids who have diabetes, ages 11 से लेके 18. ठीक है, but these kids are gonna come with their family members, so that's why we said 94 families. 94 kids of ages 11 till 18 who have diabetes. Let's find out. All right, they made sure कि होता है ना कि सी कॉमनली एग्जांपल ये कि जब बच्चे को डायबिटीज होगा, इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत खतरनाक है. कि हो सकता है अदर मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. तो बहुत कॉमन है कि यंग बच्चों को डायबिटीज़ के साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं. सो दे मेड श्योर कि भाई हमारे पास सिर्फ ओनली प्योर डायबिटीज़ का बच्चा हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो साइकोलॉजिकली अनस्टेबल बच्चे होंगे दे वोंट बी एबल टू फिल द फॉर्म, तो मसला आ जाएगा. तो दे मेड श्योर कि भाई ये हम चीज़ें कंट्रोल कर लें. क्योंकि अगर फॉर्म वापस नहीं आया ना तो इट्स 100% बिकॉज लोगों ने सीरियसली अडेयर नहीं किया एंड नॉट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स. और द फॉर्म्स दैट वर गिवन टू देम वाज द डेमोग्राफिक फॉर्म, जहाँ पे नेम वगैरह सब कलेक्ट करते हैं. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं, द अडेरेंस क्वेश्चन. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट द पीपल आर सपोज टू गिव बैक टू द हॉस्पिटल. ठीक है, all right. So how was this experiment carried out? Clinic के अंदर, right? People gave the interview, right? People, ये interview दिया and fill out the demographic form, and घर पे जाके एक form दिया गया, right?
जिसके जिसको उन्होंने मेल करना है. एंड द थिंग इज इफ दे डोंट मेल इट इन 10 days, उनको हम कॉल करके याद दिलाते हैं कि भाई मेल कर दो. उसके बावजूद नहीं आता, इसका ये मतलब है कि दे नॉट सीरियस अबाउट रिटर्निंग द फॉर्म. इसके बाद इसका ये मतलब है 10 दिन के बाद फ़ोन करने के बाद अगर उन्होंने फॉर्म वापस नहीं किया तो दैट मीन्स कि दे नॉट गोना टेक पार्ट इन आवर स्टडी. ठीक है. और द रिजल्ट्स, 94 में से 52 people actually returned the form. So yeah, 14 people on face उसी वक्त कह दिया भाई हमें हिस्सा नहीं लेना. तो ऑब्वियसली हम इनको अपनी स्टडी का हिस्सा नहीं गिनेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम आपकी स्टडी का हिस्सा नहीं लेंगे, इसका ये मतलब है कि हम ये फॉर्म पकड़ के भी लेके नहीं जाएंगे घर पे ना. तो वी डोंट काउंट देम इन द रिसर्च, वी आर गोना काउंट दोस पीपल जो फॉर्म पकड़ के ले गए और वापस नहीं किया. वो 28 लोग आते हैं. 28 वो लोग हैं जो फ़ोन कॉल के बाद भी फॉर्म वापस नहीं किया. ये वो लोग हैं जो इन्होंने खुद से नहीं बताया कि वी आर नॉट गोना टेक पार्ट, फॉर्म लेके घर चले गए, आज तक वापस नहीं आए. ये वो लोग हैं 28 पीपल. लेट्स फाइंड आउट. Let's go back a bit, right? How do we find out? How do we find out? Remember this questionnaire, ये वाला. This is done twice. एक घर में देते हैं, भाई आप घर लेके जाओ, सॉल्व करके लाओ. और एक हॉस्पिटल के अंदर होता है, ये वाला. सी, बच्चा हॉस्पिटल के अंदर डेमोग्राफिक फॉर्म भी करता है और अटेंडेंस वाला इंटरव्यू भी करता है. ठीक है. और वही अटेंडेंस वाला क्वेश्चन है, बच्चा घर लेके भी जाता है. तो बेसिकली हमारे पास क्लिनिक के अंदर अटेंडेंस वाला इन्फॉर्मेशन तो है. अब वो घर से क्या फिल करके लाता है उसको हमें कंपेयर करना था. सीन क्या होता है, तो बेसिकली वेदर पीपल टेक पार्ट इन द एक्सपेरिमेंट और नॉट, वेदर द पीपल गिव देयर फॉर्म्स बैक फ्रॉम द हाउस और नॉट, हमारे पास ऑलरेडी इनका अटेंडेंस का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगा, क्योंकि हमने हॉस्पिटल के अंदर कलेक्ट कर दिया था. सो टर्न्स आउट the 52 people who returned these forms, they scored very good in the hospital के attendance के forms. The people who did not return the questionnaire scored low on in the hospital के attendance के forms. So yeah. So इसका ये मतलब है कि भाई people who don't return the forms overall have fewer adherence ratio, and people who do return the form have good adherence scores. इसको हमने एक और तरीके से क्रॉस चेक किया. डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट होती है ना, हमने पूछा कि या ये 28 लोग हैं, इनके पास हमारे पास डेमोग्राफिक फॉर्म अवेलेबल है, क्या इस पेशेंट ने कभी आपके पास आके टेस्ट कराया? डॉक्टर कहता नहीं. ये वही 28 लोग हैं जो कम टेस्ट कराता है. सो ऑब्वियसली द पीपल हु डोंट गिव द फॉर्म हैव लो अडेरेंस एंड ऑल्सो टेक लेस अमाउंट ऑफ टेस्ट्स compared to these people. So this goes to show that यार, people who don't return their forms, chances are they're not taking their medications as well. ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, so I'm going to restart the meeting and then we'll continue.